So they have given us like phosphorus is a non-metal in group 5 of the periodic table. Phosphorus can be manufactured from calcium phosphate. Okay, so this is phosphorus and they are actually manufacturing it from calcium phosphate. They are saying what is the maximum mass of phosphorus that can be made using 300 gram of silicon dioxide. So we are given with the mass of this one. So first of all, what we need to do, we are going to find the moles of SiO2, which is given, whose mass is given. So formula होता है हमारे पास mass over molar mass. So if we have mass which is 300, and what is the molar mass for silicon? जी बेटा, silicon का molar mass बताएं क्या होता है जल्दी से? सर सिलिकॉन का मोलर मास 60 है। नहीं, silicon का, only I'm asking about silicon, it's 28, and then for oxygen it's 16, so I'm going to multiply it with 2, so it would become 300 divided by 60, and that would become 5. Now we want to find out the mass of phosphorus. So the one which is unknown, we are going to write it on the right hand side. On the left hand side, we are going to write silica, whose moles are known. And we are going to write P4 here. So according to equation, if you are going to see, according to equation, 6 mole of silica reacts to produce 1 mole of phosphorus. Okay? And now, if there would be 1 mole of silica, then there would be 1 by 6 moles of phosphorus, because 6 comes here. But if there would be 5 moles, then it would become 1 by 6 multiplied by 5. जी बेटे ये क्या आ जाता है 5 by 6, and kindly find it from the calculator. What is the answer? जी बेटा सर द आंसर ऑफ दिस इज 0.833। 0.833. Now, what we need to do, we are going to find the molar mass of phosphorus. So we know mole is equal to mass over molar mass. And here mass would equal to mole multiplied by molar mass. ठीक है, तो बेटे मोल्स का क्या फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे? मोल्स कितने हमारे पास? 0.833। एंड बेटे मोलर मास कितना होता है P4 का? जी P1 का कितना है? खाली फास्फोरस का कितना है मोलर मास? 30। 31 होगा ना? आई थिंक दैट इज 31, and you are going to multiply it with 4, so that would become 124. So बेटे इसको आप 124 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, then what is the answer, मूसा? So the final answer would be sir 103.292। 3.292, that should be expressed in grams. ठीक है? So there's a question in which they are saying sphalerite is an ore containing compounds of zinc. One of the compound in the ore is zinc sulfide. He's saying calculate the mass of zinc in 30.0 tons of zinc sulfide. So they want us to find only the mass of zinc. So we can say that the formula should be mass of zinc. Okay, it's we are basically talking about molar mass here. Okay, molar mass of zinc, okay, divided by, this should be molar mass. Okay, and divided by molar mass of zinc sulfide multiply by, ठीक है, multiply by क्या आ जाएगा हमारे पास? We are going to multiply it with 30.0 tons. Is that clear?
सो बेटे मोलर मास ऑफ जिंक कितना है, जरा मुझे जल्दी से देख के बताएं। जी बेटा, मोलर मास ऑफ जिंक कितना है और मोलर मास ऑफ जिंक सल्फाइड कितना है? ओके सर। सर मोलर मास ऑफ जिंक इज 65। 65, and at the bottom it would become 65 plus 32, and we are going to multiply it with 30 tons. Okay, तो देखें बेटा क्या आ जाएगा, 65 डिवाइडेड बाय, ये बन गया 87 multiply by 30. Now can you please tell me the final answer? सर 65 प्लस 32 97 होगा। Okay, that is 97. That's fine. जी बेटे, अब बताएं, आंसर बताएं जल्दी से। सर 20। 20 आ रहा है, एग्जैक्ट 20। 20.1। 20.1. So this is your answer. So now we are going to have this question. We will just be solving the question related to moles. So they are saying that what is the mass of sulfamic acid is required to make this much volume and this much concentration. So for that purpose, we know that there is a formula for concentration, that is mole is equal to volume multiplied by concentration. But remember one thing, this volume has to be in decimeter cube, but this is in cubic centimeters. So in order to convert it, what you are going to do, volume would be equal to 250 divided by 1000. So you are going to divide with 1000 and the answer would become 0.25. So this one should be 0.25 and you are going to multiply it with concentration. जी मूसा, क्या आंसर आया है इस concentration को multiply करके? जी मूसा, आंसर क्या है बेटे? सर आंसर इज 0.0375। 0.0375. This is number of moles. Okay. Now, आपने क्या करना है? You have to find out the mass. So बेटे mass का क्या फॉर्मूला होगा? Mole is equal to mass over molar mass. तो बेटे mass का क्या फॉर्मूला होगा? Mass would equal to 0.0375 multiply by molar mass. तो बेटे मुझे एक बात बताओ, मोलर मास अगर हम लोग यहाँ से सीधा निकाल लेते हैं, लाइक देर इज वन सल्फर, ओके, एंड देर इज ऑक्सीजन आर 3, and we have one nitrogen and H is 3. Yes, H is also 3. So let's calculate it. Sulfur is 32, oxygen is 16 into 3, plus we have 14 for this plus 3. सो जी बेटे क्या क्या आ रहा है इनको ऐड करके? 48 प्लस 17. So this would become 65 and we have 97. जी सर 9 सर 32 प्लस 45 प्लस 17 इज 94। 94 बन रहा है। आर यू श्योर? यस सर। एक सेकंड, नो एक सेकंड सर, वन सेकंड। यस सर यू आर राइट, इट्स 97। नहीं मूसा, 80, 80 प्लस बेटे 97 ही बन रहा है। सर 97 ही आ रहे हैं। अच्छा, अब बेटे इसको आंसर बताएं क्या आएगा फाइनल? mass is equal to 0.0375 multiplied by 97. सर 3.64। 3.64 grams. Okay, so this is our final answer. So in order to calculate its empirical formula, we are given with carbon, we are given with hydrogen, we are given with oxygen, and we are given with sodium. So let's write out their percentages. That would be 29.3, that would be 3.7, and for oxygen is 39, and for sodium is 28. So we are going to divide them with their molar mass, and this is 12, for this is 1, for this is 16,
and for this is 23. Ji Musa, let's calculate it together. 29.3 divided by 12. Yes, what is the answer? जी बेटे आंसर क्या है? Okay, so 29.3 divided by 12 is 2.441. 441, and for this is 3.7, and for this is Sir, for this it's 2.4375. 2.4375, and for this is Sir, 1.217. 2.217. So अब आप इसको डिवाइड करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट से, so that is 1.217. So 1.217, this is also 1.217, and this is also 1.217, this is also 1.217. तो बेटे ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, and this would comes out to be 2 again, this would comes out to be 1 again. So carbon is 2, hydrogen is 3, oxygen is 2, and sodium is 1. So this is the right answer. Okay, ना इसको okay. So calculate the mass of titanium from 1000 gram of TiCl4. Okay. So they want us to calculate the mass of titanium. So they are actually asking about the actual mass. We have to find the actual mass because they have given us 1000 gram. They have given us the mass of TiCl4. From that, first we are going to calculate the theoretical mass of titanium. How we are going to do that? So first of all, we are going to find the number of moles. So number of moles of TiCl4 can be calculated from uh, mass is 1000 grams over molar mass. So molar mass here is titanium का क्या होता है 48, and for chlorine is 35.5. You are going to multiply it with 4. जी बेटे आंसर बताइए जरा मूसा. नीचे क्या आ जाएगा 48 प्लस जी मूसा इसका आंसर बताइए Okay, क्या है? sir, okay, sir, एक सेकंड में calculate. जी बेटा क्या आ गया आंसर? Okay, so 35.5 into 4 is 142. 142. तो मूसा ये 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इसको टोटल करके बताएं जल्दी से. 190. 190. फिर आंसर बताएं फाइनल क्या आ जाएगा. 1000 डिवाइडेड बाय 190, व्हाट इज द आंसर? Sir, 5.26. 5.26. So now we are having the moles of TiCl4, but we have to find the moles of titanium. So we know the one which we want to find, we are going to put it on the right hand side. So this is titanium. So let's see it from the equation. So 1 mole, equation ke 1 mole is producing 1 mole of titanium. So this is 1 mole. So if we have calculated this is 5.26, then for titanium is also 5.26. Okay. So beta, now what you need to do, you are going to find the mass of it. How you are going to do that? We know mole is equal to mass over molar mass. तो बेटे आपने कितना मोल्स निकाले टाइटेनियम के 5.26, and we have to find mass. What is molar mass? We know that is 48. So बेटे जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बताओ mass क्या आ रहा है? Sir, 5.26 108.48. 108 point. 48. आर यू श्योर यही आ रहा है? 48 को आपने 5.26 से मल्टीप्लाई किए, मुझे नहीं लग रहा. Hey, since I think there is miscalculation mistake, let me recheck. जी जल्दी से चेक करें.
Okay, so the answer was 5252.48. 252.48. So we know that the formula is percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiply by 100. तो बेटे यहाँ पे हम लोगों के पास theoretical yield आई है. We know that this is theoretical yield because we have calculated it from equation. So this is theoretical yield. ठीक है, जो theoretical yield होती है हम हमेशा equation से find out करते हैं. So we have to find actual yield over there. So what is percentage yield? That is 90 is equal to, we have to find this actual yield divided by theoretical is 252.8 multiplied by 100. तो बेटे फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है? एक्चुअल इज इक्वल टू 90 multiplied by 252.8 divided by 100. तो बेटे बताएं फाइनल आंसर क्या आ रहा है? जी So the बेटे, final answer is 227.23. 227.23 is your final answer. Is that clear? The ray part. So they are saying W is a compound containing carbon, hydrogen, and oxygen. So first we are going to have to find the molecular formula. So we have carbon, we have hydrogen, but मूसा हमारे पास ऑक्सीजन का मास नहीं गिवन. कार्बन का तो है 57.1, हाइड्रोजन का है 4.8. बेटे ऑक्सीजन का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? So 57.1 plus 4.8 minus 100. जी शाबाश. तो आप 100 में से माइनस करेंगे क्योंकि 100 इज द टोटल अमाउंट. सो 57.1, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताएं. 4.8. जी बेटे आंसर क्या आ जाएगा मूसा? जी मूसा जल्दी से आंसर बताएं, ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा? Sir 30. Okay, sir. So 57.1 plus 4.8 is 61.9. 61.9. जल्दी से फाइनल आंसर बताएं ना मुझे. 100 minus 61.9. So 38.1. 38. सो अब हम इनको इनके मोलर मासेस से डिवाइड कर देंगे. ऑक्सीजन को 16 से कर दिया. जी बेटे क्या है यहाँ पे आंसर? 57.1 डिवाइड बाई 12. So 4.75. 4.758. यहाँ पे भी 4.8 आ गया और यहाँ पे क्या आ रहा है? 2.381. तो अब सबको हम स्मॉल नंबर से डिवाइड करना है विच इज 2.38. तो बेटे दैट कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली 2 रेशो, दैट इज 2:1. सो दैट वुड बिकम C2H2O. ठीक है. सो ये हमारे पास इसका एम्पिरिकल फॉर्म. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ वी आर गिवन with the mass of W, which is 0.194, reacts completely with KOH. तो KOH का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें साथ कंसंट्रेशन दी हुई. तो बेटा हम सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमें पता है फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. और बेटे ये वॉल्यूम किस में एक्सप्रेस होना चाहिए? दैट शुड बी इन डेसीमीटर क्यूब. तो बेटे कंसंट्रेशन हमारी पास है 0.250. इसको मैं मल्टीप्लाई करूं वॉल्यूम से तो मैं 18.5 को डिवाइड कर दूंगा 1000 से. मूसा फाइनल आंसर बताएं जल्दी से. So final answer is 0.004625. 0.004625. 4625. चले. अच्छा अब देखिए दे आर सेइंग 1 मोल ऑफ डब्ल्यू रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ केओएच. तो बेटे हम लोगों ने क्या चीज फाइंड आउट करनी है? हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं डब्ल्यू के.
ठीक है। तो बेटे हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अननोन हम लोग राइट हैंड साइड पे रखते हैं, तो W हम राइट हैंड साइड पे रख रहे हैं। वी नो 3 moles of QH is going to react with 1 mole, and if there would be 1 mole that are going to react with 1/3 moles of W. ठीक है मूसा? अच्छा, now Yes, sir. if there would be 0.004625, तो आपको पता है 1/3 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 0.004625 से। जी मूसा, क्या आंसर आ रहा है बेटे? Okay, sir. मैं समझ गया. Sir, 0.00154. 0.0154। ये हमारे पास क्या आ गए हैं? हमारे पास आ गए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके आ गए बेटा? W के। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास W का मास गिवन है, मास ऑफ W बेटे वो है हमारे पास 0.194। तो बेटे हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। और बेटे यहां से हम लोग मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से? हम मास को रखेंगे ऊपर, तो बेटे मास कितने हमारे पास? 0.194। और नीचे आ जाएगा बेटे हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, दैट वुड बी 0.00154। जी मूसा, क्या आंसर आ जाएगा फाइनली? Sir, 125.97. 125.97, which is approximately equal to 126. So this is the molar mass. Is that clear?